Okay, so it's because of the importance of these seats that now a cast spin has been given by Narendra Modi to Priyanka's Neet Rajniti jibe. But what does this vote bank of the BSP actually think about the caste politics that is being played? We get you a ground report. मोदी जी की लहर तो आप मीडिया बंधु की देन है। आप लोगों ने मोदी जी को आज आसमान में बिठा दिया है, लेकिन ये सब केवल हवा हवाई है। और इस समय अगर लहर है तो लहर बहन जी की है, और पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने का कार्य बहन जी करेंगी और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। संत कबीर नगर बस्ती दोनों सीट से हमारे व्यापारी बंद खाली बसपा को जिताएंगे, क्योंकि बसपा के राज में हम लोगों को बैठ नहीं लगा था। अब बसपा जब गई तो हम लोग को बैठ लग गया, हम लोग परेशान हो गए। यहाँ पर कोई मोदी लहर नहीं है, यहाँ सिर्फ बसपा की लहर है। हम लोग बसपा को जिताएंगे और कुशल तिवारी का हैट्रिक लगवाएंगे। You know, the threat for the BJP, Pranshu, is that the BSP has been quietly going about their work. Amit Shah has toured all the constituencies extensively, and the party cadre, the message to them is to counter the force or the onslaught of the BSP, isn't it? Yes, Anand, that's right. In fact, as far as the BJP's rising graph or the phase-wise analysis is concerned, first to phase in the Western Uttar Pradesh, clearly BSP did suffer a dead end with the consolidation of the Dalits as a Hindu community. But remember, ever since a few weeks back when Ramdev made that the Dalit honeymoon and the Dalit homes remark, from that was probably the turning point for the BSP, because that statement is being read as something which again galvanized the entire Dalit community towards the BSP, and it eroded away any sort of comradeship which might be developing between the Dalits and the BJP till that point in time. So clearly, since